कित्ति सद्दो अभुगतो इति पिसो भगवार सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्न सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्तादि मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। अन्मयं बुद्धाभिगीतिं करोमसे बुद्धवारहंत वरतादि गुणाभियुतो बुद्धाभिज्ञान करुणा हि समागततो बोधेसियो सुजनतं कमलं वसुरो वन्दामहं तमरणं शिरसा चिनेन्दं बुद्धो यो सर्वपाणिनः शरणं खेमम् उत्तमम् तिष्ठान् वन्दामितं शिवं बुद्धस्मि दासो वा बुद्धो मे सामि किस्सरो दशहं नियादे शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि बुद्धस्य वसुबोधितं नास्ति मे शरणं वरं एतेन सत्यवज्रेण वयं सत्तुशासने बुद्धं मे वन्दमानेन यं पुण्यं वसुतं इद दो पटिगन हाथो अत्यंतम कालांतरे संवरितुम बुद्धे अन्वयं धम्मानुसतिनायं करोमसे साक्षातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको एहि पश्यि ओपनयिको पच्चत्तं वेदिता विन्यहीति। अन्वयं धम्माभिगीतिं करोमसे साक्षात् निर्गुण योगवशेन सेयो यो मार्गपाकपरिवृत्ति विमोख वेदो धम्मो कुलोकुपतनातदारि दारि वन्दामहं तं हरं वरधम्ममेतं धम्मो यो सर्वपाणिनः शरणं खेमम् उत्तमं द्वितीयानुसतिष्ठान् वन्दामि तं शिरेणहं धम्मस्मि दासो वा धम्मो मे सामि किस्सरो धम्मसंनियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि धम्मस्यैव सुधम्मतं नास्ति मे शरणं अन्यं धम्मो शरणं वरं एतेन सत्यवज्रेण वद्देयं सत्तुशासने धम्मं मे वन्दमानेन यं पुण्यं प्रसूतं इद सर्वेऽपि अन्तरायां मानेषु तस्य तेजसा कायेन वाचा वाचेत्सा धम्मे कुकम्मं पकट धम्मोपटिगणातु अत्यन्तं कालान्तरे संवरितुं धम्मे अन्वयं संघानुसतिनायं करोमसे सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो
उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो समीचीपटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगा अट्ठ पुरुष पुद्गला एषु भगवतो सावक संगो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यकेतं लोकसाति अन्नमयं संगाय विगीतिं करोमसे सद्धम्मजो सुपटिपति गुणादियुतो यो अट्ठविद्धो अरियपुङ्गल संगसेठो शीलादि धम्म पर सयकाय चित्तो वन्दामहं तं ततीयानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेणहं संगस्सस्मि दासो संगो मे सामि किस्सरो संगस्सहं नियादे शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्या संगस्सोपटिपन्नतं नत्थि मे शरणं अन्य संगो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जे वड्डेयं सत्तु शासने संगं मे वन्दमाने यं पुण्यं पशुतं इद सब्बेऽपि अन्तराया माहेशुं तस्य तेजसा कायेन वाचया वाचेत्सा वा संगे कुकम्मं पकटं पठिगणातु अचेन्तं कालान्तरे संवरितुं वसंगे ब्रह्माच लोकाधिपति सहम्पति कतंजलि अंधिवरं अयाचत संतीव्र सत्ता परजक्ख जातिका देशे तु धम्मं अनुकंपिमं भजम्। Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa buddhang dhammang sanghang gunuttarang upajjayang namasami
I'd like to begin this evening by relating to you an interesting discovery that was made from some research into the various schools or branches of psychotherapy. There was an attempt to determine which particular approach, which particular school is most successful in helping people with psychological issues. The result was that the success of therapy had very little to do with the theory and with the particular school of psychotherapy, but the main predictor of success was the quality of the relationship between the therapist and the therapy. अजान कह रहे कि हम आज की चर्चा का शुरुआत करेंगे एक नई खोज से जो साइकोथेरेपी मनोचिकित्सा के जो विभिन्न स्कूल हैं, विभिन्न तरीके हैं, उनके बारे में उसमें रिसर्च हुई थी कि कौन सी तरीका जो है सबसे अधिक उसकी सफलता होती है ताकि जो मानसिक रोग हैं उनमें सहायता हो। तो आप कह रहे हैं कि उन सबसे ये निष्कर्ष निकला था कि चाहे कोई सा भी थ्योरी कैसी भी अच्छी हो, कोई भी मनोचिकित्सा का कोई भी आयाम हो, कोई भी ब्रांच हो, उस थ्योरी से उसका कोई ज़्यादा संबंध नहीं था, लेकिन जो सफलता होती थी वो इस बात पे निर्भर करती थी कि जो साइकोथेरेपिस्ट हैं, जो मनोचिकित्सक हैं और जो मनोरोगी हैं, उनके आपस के बीच के संबंध कैसे बनते हैं, कितने अच्छे उनके आपस के संबंध बन पाते हैं। Now the analogy that I would like to a function of the particular meditation technique that we apply, as in the quality of our relationship with the Buddha, the Dhamma and the Sangha. आप कह रहे हैं कि जो इस उदाहरण का जो प्रयोजन हम धर्म के क्षेत्र में लगाते हैं, तो जो धर्म में प्रगति है, धर्म के मार्ग पे जो प्रगति है, वो इस बात पे निर्भर नहीं करती कि कौन सी साधना की विधि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारा बुद्ध धर्म और संघ के प्रति किस तरह का संबंध है, उस पे ज्यादा, उसकी कैसी गुणवत्ता है, उस पे डिपेंड करता है। To illustrate the kind of relationship or commitment, I would like to relate a story, an old teaching story. The teacher takes the pupil down to the seashore and gives the pupil a colander. So the colander, you know, is the vessel for draining fluid away from vegetables and so on. So it has many small holes in it. And the pupil holds the colander and puts it under the water. But of course, when he lifts the colander, all the water comes out. So the teacher is saying you have to fill the colander with water. This is your challenge. And no matter how the student tries to fill the colander for water, as soon as it's full and lifts it up, the water disappears. Finally, the student gives up, says it's not possible to do this. And the teacher takes the colander from the student and throws it into the sea, and it sinks.
And he says, now the colander is full of water. आप एक इस बात को समझाने के लिए एक दृष्टांत दे रहे हैं कि एक पुरानी शिक्षा की छलनी पानी, तो सभी विद्यार्थियों ने कोशिश की तो कोई भी स्वतः स्वाभाविक है कोई उसमें गई है. Tend to want to pick and choose amongst the teachings, and we still want to hold on to certain views, opinions, desires, and this is like us still holding on to the vessel and trying to fill it with water. It never fills. So it's only when we're able to make that wholehearted dedication to Dhamma that the vessel will become full. अजान बता रहे हैं कि इस दृष्टांत से जो वो समझते हैं कि जब तक सामान्यता जो is one in which we don't pick and choose, one in which we take on all of the teachings with a humble heart. तो ये आप कह रहे हैं पहला बिंदु है जो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा त्रियतन के साथ कैसा संबंध है और हम सारी जो शिक्षा है उसमें से कुछ सेलेक्ट करके चूज ना करें, जो सारी शिक्षा है उसके सबके प्रति समर्पित रहें. So being humble is often presented as a virtue to be cultivated, and gratitude is also something that we are told that we should have. We should be humble. We should be grateful. But this is not a matter of should. The more we understand the way things are, the more we understand the Dhamma, the more the qualities of humility and gratitude emerge. I was speaking to another Western monk recently, and we agreed that probably for Western Buddhists, at least, the first indication of progress in practice is not necessarily strong meditation experience, but it's a deep sense of gratitude that we feel towards our parents. So gratitude for parents is not a virtue and not something which is much emphasized in Western culture, but it's something that emerges when you start looking at your mind and you start understanding the way things are. तो हम आगे बता रहे हैं कि जो ह्यूमिलिटी है एक हमारी बहुत अच्छी एक हमारी वर्च्यू है, बहुत अच्छा गुण है हमें, और इसी तरह कृतज्ञता का गुण है. ये दोनों सामान्यतः कहा जाता है कि हमको इनको डेवलप करना चाहिए, इनको भावित करना चाहिए, लेकिन आप बता रहे हैं कि ये ऐसी चीज नहीं है, इसको शुड के रूप में नहीं देखना चाहिए. ये एक स्वाभाविक बात है. जैसे जैसे हमें धर्म समझ में आता है, ह्यूमिलिटी और ग्रेटिट्यूड जो है, कृतज्ञता का भाव और अहंकार की कमी, दोनों ही अपने आप बढ़ते हैं. तो बता रहे हैं कि हाल ही में एक पाश्चात्य देश के भिक्षु से बात करते हुए उन्होंने चर्चा में ये पाया कि अगर हमको साधना में प्रगति को मापदंड रहना है तो वो ये मापदंड नहीं है कि रखना चाहिए शुरू में कि हमारी साधना कितनी गहन हो रही है, लेकिन क्या सचमुच में हमारे मन में अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता जागी है. सामान्यतः इस बात को इतना महत्व नहीं दिया जाता, बट आपका कहना है कि ये एक मापदंड, अच्छा मापदंड है हमारी साधना को गहराई से समझने का. So when we
we start to look more closely at our mind and the qualities, the wholesome and unwholesome qualities within our minds, we begin to see that there are a lot of good qualities in our minds, and that in almost every case we owe the presence of those good qualities to our benefactors, beginning with our parents. And this sense of awareness of all that has been given to us is one of the most important sustaining factors on the path of Dhamma. आजान बता रहे हैं कि जब हम मन को बहुत गंभीरता से निकट से देखते हैं और पाते हैं कि हमारे मन में कई अकुशल और कुशल वृत्तियां होती हैं और कई सारी हमारी अच्छी वृत्तियां भी हमारे मन में पाई जाती हैं, तो इन वृत्तियों को हमको देखते हुए ये समझना चाहिए कि ये जो हमारे कल्याण मित्र रहे हैं या खास तौर पे हमारे माता पिता हैं, उनके माध्यम से ये गुण हमारे में आए हैं। तो और इस बात के प्रति हमें सजग रहना चाहिए कि जो कुछ भी हमें मिला है, जो कुछ भी हमें विरासत की तरह एक तरह से मिला है, वो उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रहे, तो ये हमारे को साधना में आगे बढ़ाने में बहुत सहायक होता है। Similarly, if you look at the unwholesome dhammas within your mind very honestly, and not trying to explain them away or turn your back on them, then looked at in the correct way, this will give rise to a humble heart. इसी प्रकार अगर हम अपने अकुशल वृत्तियों को ठीक से देखेंगे और उनको किसी तरह से उनकी ट्राई टू एक्सप्लेन देम अवे, उनको किसी ना किसी तरह से जस्टिफाई ना करेंगे, तो इससे हमको एक चित्त जो है शांत होता है, उससे हमको चित्त के अंदर जो अहम भाव होता है वो कम होता है, ह्यूमिलिटी बढ़ती है। So on the path of practice, we need to be developing the two kinds of qualities. One is the heart qualities, in order to create the emotional maturity necessary for penetration of the Dhamma. And secondly, we need to be developing the wisdom qualities, which allow us to look clearly and deeply into the nature of things. साधना के मार्ग पे आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं कि दो प्रकार के गुण हमें विकसित करने होते हैं। एक तो चित्त के गुण, हार्ट क्वालिटीज, जिससे कि हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी की बात आती है, हमारे हम कितने भावनात्मक रूप से मैच्योर हैं, और दूसरी है कि विजडम क्वालिटीज, जो प्रज्ञा की गुण है, प्रज्ञा के गुण हमको डेवलप करने सकते हैं, क्योंकि उनके आधार पे ही हम जो भी जैसा हो रहा है उसको उस हिसाब से ठीक से देख पाते हैं। So on the path of practice, we need to develop many different tools. For instance, we need to be able to deal effectively with depressed states of mind, or when we lose our inspiration, or when we become bored and discouraged. But we also need to have the tools to deal with the mind when it becomes very excited and distracted and agitated.
साधना के मार्ग पे हमें जो इस तरह के टूल्स डेवलप करने की जरूरत है, इस तरह की एबिलिटी डेवलप की जरूरत है कि जो हमारा जब मन उदास हो, डिप्रेस स्टेट में हो, हमारी जो इंस्पिरेशन है, जो हमारी धर्म संवेग है वो कम हो रहा है, अंदर डिस्करेजमेंट हो रहा है, मन हतोत्साहित हो रहा है, उस तरह की मनस्थिति को कैसे डील करें। और दूसरी ओर, दूसरी अति की तरफ दूसरा जो अंत है इस बात का कि जब बहुत मन एक्साइट हो जाता है, बहुत भटक रहा है, इधर उधर जा रहा है, एजिटेट हो रहा है, बहुत बेचैन हो रहा है, तो उसको कैसे हमको डील करना है। तो ये दो तरह के हमको क्वालिटीज डेवलप करने की जरूरत पड़ती है। So one way of talking about the cultivation of the mind, the heart, is to divide meditation techniques into two categories, and I would call these two categories discursive and non-discursive. In other words, meditations that use thinking, systematic thinking as a foundation, and meditations which do not use the thinking mind at all. जो साधना का मार्ग है मन और चित्त को डेवलप करने का, उसको अजान दो तरह से डिवाइड करते हैं, दो कैटेगरीज में। एक है जिसको वो कह रहे हैं डिस्कर्सिव, जिसमें कि हम ठीक तरह से सोचने का भी काम करते हैं, विचार करने का काम भी उसमें इंक्लूड है। दूसरा जिसे वो कह रहे हैं नॉन डिस्कर्सिव, अर्थात जिसमें कि विचार बिल्कुल नहीं करेंगे। So the examples of the non-discursive kinds of meditation would be anapanasati, and also the scanning technique taught by Mr. Goenka. तो जो नॉन डिस्कर्सिव टेक्निक कह रहे हैं आप, जिसमें कि विचार करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें आप कह रहे हैं आनापानसति जो हम जानते हैं, और जो शरीर को स्कैन करने का, जो बॉडी स्कैनिंग का है, जिसे हम विपश्यना के नाम से कहते हैं गोयंका जी, उसको भी वो नॉन डिस्कर्सिव अर्थात जिसमें विचार करने की जरूरत नहीं होती, उसमें उस कैटेगरी में डालते हैं आप। But sometimes we come to sit down in meditation. Maybe the mind is very dull and lacking in energy, or the mind is very, very agitated and upset, and there is a lot of resistance to the non-discursive kind of meditation. And this is, on such an occasion, it is very useful to apply some of the discursive meditation techniques. कई बार जब हम साधना के लिए बैठते हैं तो हमारा मन बहुत उच्छृंखल होता है, डल होता है, और बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं है, आलस्य आ रहा है, या बहुत अपसेट है, या बहुत बेचैनी है। तो ऐसी स्थिति में वो विचार क्योंकि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो जो नॉन डिस्कर्सिव उसने आपने कहा जिसमें विचार नहीं आने चाहिए, उस तरह की साधना करने में दिक्कत होती है। तो ऐसे समय पे जो दूसरी साधना विधि बता रहे हैं जिसमें कि विचार का इस्तेमाल करते हैं, डिस्कर्सिव टेक्निक, वो इस्तेमाल करनी चाहिए। The discursive meditations are usually designed to use the power of systematic thought to stimulate certain helpful emotions. जो डिस्कर्सिव मेडिटेशन आप बता रहे हैं उसका इस तरह से वो डिज़ाइन की जाती हैं कि जो हम ठीक तरह से सिस्टमेटिकली सोचें, ठीक तरह से विचार करें, तो उससे हमारे को मदद मिलती है कि हम ठीक से उन परिस्थिति को एनालाइज कर सकें।
So all meditation techniques follow a certain common pattern. That is to say that the mind has to go beyond the 5 hindrances. And as the mind emerges from the 5 hindrances, there is the state of pamoja, an intense state of well-being, which develops into feelings of rapture, piti, and sukha. So the challenge of the meditation is to reach this state of pamoja. And then once you are out of the gravitational pull of the hindrances, then there is this natural progression from pamoja, piti, sukha, and the meditation becomes much deeper. सभी विधियों में एक जो कॉमन चीजें हैं, आप बता रहे हैं कि जो मन को साधना में 5 जो हम निवरण जानते हैं उनसे बाहर निकलना होता है, और जैसे ही 5 निवरण से मन बाहर निकलता है तो प्रीति प्रमोद जागता है, और प्रमोद से प्रीति जागती है, प्रीति से सुख जागता है। और जब हम इन 5 निवरणों के प्रभाव से बाहर आ जाते हैं तो नेचुरली हमारा मन प्रमोद की तरफ भगता है, और फिर साधना हमारी गहन होने लगती है, डीपन होने लगती है साधना। So understanding this, you can be creative in the discursive meditation. For instance, if your mind is very active, let's say you've been at work or you've had a lot of activity during the day, there's like a momentum of thought. And if you try, unless you're a very experienced meditator, then you feel like you're going against the momentum of the mind too much. It's very frustrating. But you can channel that momentum into a systematic thought leading to positive emotion that takes the mind beyond the hindrances. इस बात को जब हम ठीक से समझते हैं तो हम जो डिस्कर्सिव मेडिटेशन आप बता रहे हैं उसमें काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं, उसमें नए आयाम लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम मन बहुत एक्टिव होता है, जैसे मान लीजिए दिन भर आप काम करके आए हैं और फिर वापस बैठ रहे हैं, तो जब तक कोई बहुत एस्टैब्लिश्ड मेडिटेटर नहीं है उसके लिए बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग स्टेट हो जाती है कि मन इतना एक्टिव है और मन शांत नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम उस जो एक्टिव माइंड को सिस्टमैटिक थिंकिंग में लगा सकते हैं कि एक योजनाबद्ध तरीके से, ठीक तरीके से उसको लगाएं, ताकि इस तरह से लगाएं ताकि हमारे चित्त में जो कुशल इमोशंस हैं, कुशल भावनाएं हैं, कुशल चित्त की वृत्तियां हैं वो पैदा हों और फिर हम साधना की ओर बढ़ सकते हैं। So let me give an example. Let's say as an exercise, imagine that this is we are living in the time of the Buddha, and we have heard that near to where we live, the Buddha and 500 arahants are living in a cave, and today we're going to go and make offering. So we get up very early in the morning, and just to try to imagine, you get up so early in the morning, first thing probably you want to do is to have a shower, because you want to be so clean and fresh to go and clean clothes, and then you prepare some food for the Buddha. How would you think of the mindfulness and the joy that you would have in preparing some food for the Buddha and the Arahant? And then you imagine you walking from your house and you're carrying this food, and how mindful you would be and how joyful you would be to have this opportunity
and then you come to the mouth of the cave, and you walk in, and then you see the candle, then you see the figure of the Buddha and all the Arahants sitting behind their bowls, and you're walking in, and so you can create almost like a movie out of this. You can use your creativity and your thinking, but you're thinking on a particular theme. Your mind's not going off into agitation, the past and the future. You're sustaining your mind on this very wholesome and beautiful story of going to offer food to the Buddha. You imagine you're crawling and you're putting the food, and maybe you want to look up and look at the face of the Buddha, but you're not sure, is it okay, and you can, just play with this, and you find all this joy and this positive emotion arising, which you reach a certain point, and now you can go to the meditation on the breath or your other non-discursive meditation object, and now you have a great energy as like an engine for your meditation. So this is one example of using the thinking mind as a way of dealing with a mind which is not yet kind of really ready for the non-discursive meditation, and a shortcut to the kind of wholesome emotion which can take the mind beyond the hindrances. तो आप एक उदाहरण से हमको समझा रहे हैं कि कैसे सिस्टमैटिक थिंकिंग से एक हम कुशल विचार करके हम अपने मन को निवरण से निकाल सकते हैं। तो उस प्रकार से एक दृष्टांत के रूप में बता रहे हैं कि आप ऐसा इमेज विचार करें कि मान लीजिए आपको मालूम पड़े कि आप जहाँ हम रह रहे हैं उसके पास ही एक गुफा में भगवान बुद्ध और 500 अरहंत बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं, और हमको एक मौका मिलता है कि चलिए हम उनको भोजन दे सकते हैं, तो कितना प्रमोद जागेगा। और अब सुबह सुबह उठेंगे, ये विचार करने की बता रहे हैं कि आप सुबह उठ के नहाएंगे, फिर तैयार होंगे, फिर बहुत सजगता से बहुत मैत्री से खाना बनाएंगे, प्रसन्नता से खाना बना के, और आप विचार कर सकते हैं कि हम किस तरह से सजग होके चलते हुए जा रहे हैं, केव के अंदर पहुंचे, केव के पास गुफा के पास पहुंच के भगवान बुद्ध को एक घुटने से चलते हुए उनके पास गए और उनके बाउल में भोजन डाल रहे हैं, अरहंत के भोजन डाल रहे हैं। तो इस तरह से इस पूरे एक स्टोरी की तरह से, एक मूवी की तरह से अपने मन में इस बात को बना के, तो ये सारी कहानी जैसी जो बनाई गई उसका कि हम किस तरह से भोजन डाल रहे हैं और किस तरह से हमको मन करता है कि हम भगवान की ओर देखें, तो ये सारी चीजें हमारे मन में प्रसन्नता, प्रीति, प्रमोद जगाने के लिए होंगी। हमारे चित्त में पॉजिटिव इमोशन आएगा, और जैसे प्रीति प्रमोद जागेगा तो ये निवरण पीछे हो जाएंगे, तो फिर हम दोबारा से अपनी साधना, आनापान या कोई और साधना जो करना चाहें वो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इस सारी विजुअलाइजेशन से इतनी एनर्जी शरीर में, वीर्य जागा हमारा, प्रीति प्रमोद जागा, और जो निवरण थे वो टेम्पररीली दब गए। Another way in which the discursive meditations can supplement the non-discursive meditation would be in the case where there is a persistent hindrance arising during meditation. So if the mind is returning again and again to strong sensual thoughts, and you return the mind to its object, and it goes again, and this is going on for some time, then it's necessary to make use of a specific antidote. So the specific antidote for the agitation of the mind created by sensual, sexual preoccupation would be meditating on or investigating the unattractive aspects of the human body.
Now the reason that this is effective is, sorry, is this too much? Is that the sensual mind is a mind which is obsessed with certain specific elements of the physical body. It chooses only those elements of the physical body which excite and stimulate, and ignores or represses any perception which does not produce that kind of reaction. So the antidote is to consciously bring to mind those elements of the physical body which we don't like to think about when we are caught in sensuality. And this, through this means, we bring the mind back to the middle way. So it's not trying to persuade ourselves that the body is disgusting, but it's opening up to the full, complete nature of the human body. एक और उदाहरण के रूप में कि किस तरह से नॉन डिस्कर्सिव मेडिटेशन जो आप समझा रहे हैं वो हमको डिस्कर्सिव मेडिटेशन में मदद कर सकती है। कि मान लीजिए किसी के साधना करने में बार बार एक ही इंट्रेंस, जैसे बहुत काम भोग के विचार बहुत ज़्यादा बार बार आते हैं, तो उसके लिए एडवाइस किया जाता है, सुझाव दिया जाता है कि हर एक के लिए एक स्पेसिफिक एंटीडोट है जो उसको उसके विपरीत विचार करने का तरीका है। तो जैसे अगर काम भोग विषय बहुत ज़्यादा आते हैं, काम तृष्णा बहुत जागती है, तो सजेशन दिया जाता है कि हम अशुभ भावना करें। शरीर के जो विभिन्न अंग हैं जिनमें जो कि हमारे इतने सुंदर नहीं है, जो शरीर के अंदर के अंग हैं, उनके बारे में विचार करें। तो इससे जो मन में एक देखा गया है कि सामान्यतः शरीर को देख के, किसी शरीर का एक पर्टिकुलर अंग को देख के वो हमको एक्साइट करता है और उसके प्रति हमारा वासना जागती है, काम भोग जागती, तृष्णा जागती है, तो और फिर हम बाकी सारे शरीर के अंगों को भूल जाते हैं। तो सुझाव ये दिया जाता है कि जब ऐसी किसी अंग को देख के ऐसा भाव जागता हो, तो जो बाकी शरीर के अंग हैं जिनके के बारे में कि हम सामान्यतः सोचना भी नहीं चाहते, उनकी ओर विचार करें, उनकी ओर ध्यान दें। तो इस तरह से हमारा मन जो है मध्यम मार्ग में फिर से आ जाता है। हम ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती अपने मन को मना रहे हैं कि शरीर बहुत गंदा है, लेकिन हम एक सचमुच में जो वास्तविक सत्य है, शरीर के विभिन्न अंगों का जो सत्य है, जिनमें कुछ असुंदर है, उसकी जो वास्तविकता है, उसके कारण हम शरीर के पूरे विवेचन को करते हैं, जिससे कि मन फिर मध्यम मार्ग में आ जाता है और फिर हम साधना कर सकते हैं। In the case where the mind is persistently falling into negative states of anger and hostility, then if simply returning the mind to the object again and again is not successful, then we have to apply specific antidote of metta bhavana and creating developing the wish for all beings to be well, happy, and free from danger and physical and mental pain. And by thinking systematically and sustaining the mind on that theme, then the negative thoughts are undermined, and the mind is brought back to the middle way. इसी तरह दूसरा उदाहरण बनते ही दे रहे हैं कि अगर हमारे किसी को गुस्से का भाव, दुर्भावना के भाव बहुत बार बार आते हो,
तो मन में साधना करते हुए वही विचार, उसी ऑब्जेक्ट को हम कोशिश करते हैं वापस जाने की, तो हमारी सफलता नहीं होती साधना में। तो ऐसी परिस्थिति में उसका जो एंटीडोट है, उसका जो विपरीत उदाहरण दिया जाता है गुस्से और दुर्भावना का, कि हम मैत्ता भावना का अभ्यास करें और सब प्राणियों के प्रति हमारा मैत्री का भाव की अभ्यास करते हैं साधना का। सारे प्राणी सुखी हों, निर्वैर हों, दुख से मुक्त हों, उनके मानसिक और शारीरिक कष्ट से दुख हो। तो इस तरह से अगर हम सिस्टमैटिकली सोचते हैं इस बारे में, मन को इस तरह के पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर लगाते हैं, मैत्री भावना पे लगाते हैं, तो हमारा मन जो है उन जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो दुर्भावना के और दोष से प्रेरित विचार हैं, तो दोष कम हो जाता है और हम फिर मध्यम मार्ग पे मन आ जाता है। So the third discursive meditation that we need to develop is the reflection on death and maranasati, and this is particularly useful if we start to become lazy and neglectful of our practice, and start to let things slide. Then we bring up the truth of our life, that we can die any day. We don't know. Even when we breathe out, we don't know if we're even going to take another in-breath. And there are so many examples around us from our own life, our own memories, and the things that we've seen on the news and heard about. There are so many cases which are teaching us that life is so fragile and life cannot be taken for granted, and that time is precious. So reflecting and thinking about death, if it makes you depressed, then that means you're not doing it in the right way. The sign of the wise reflection on death is the sense of seeing the preciousness of life and the preciousness of our family and the preciousness of all those good things around us, and the wish to use the time that we have, however much or little it might be, in the best possible way. तीसरी जो डिस्कर्सिव साधना आप बता रहे हैं, मरणानुसति की, रिफ्लेक्शन ऑन डेथ, वो मदद करती है जब हमारा धर्म की साधना के प्रति शिथिलता आ जाती है, आलस्य आता है, साधना में दिल नहीं लगता है। तो बताते हैं कि ये जो जीवन का सत्य है कि हम किसी भी समय कभी भी मर सकते हैं। अगर हमने सांस बाहर लिया तो हो सकता है कि अगले ही सांस में अंदर ना जाए, और इसको विभिन्न उदाहरणों से जो हमारी मेमोरी में है, जो समाचार हम सुनते हैं कि बैठे बैठे किसी का मन सांस रुक गया और वो चला गया, तो इस तरह के जो उदाहरण है उनको याद करके हम अपने मन में संवेग जगा सकते हैं, ये समझ के कि मानव जीवन जो है बहुत फ्रेजिल है, बहुत कभी भी नित्य है, कभी भी हम उसको जीवन हमारा छूट सकता है। तो फिर एक मन में धर्म संवेग जागता है। अगर मरणानुसति करने से हमारा मन जो है डिप्रेशन में जाता है, मन में दुख आता है, तो इसका मतलब हम ठीक से वो कर नहीं रहे हैं, क्योंकि मरणानुसति से हमको जीवन के जो बहुमूल्य होने की बात समझ में आनी चाहिए कि जो संसार हमारे पास जो भी अच्छी परिस्थिति है उसकी महत्व समझ में आना चाहिए कि उसका इस्तेमाल करके हमको साधना के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए। So, in summary, I'm suggesting that we have one main meditation practice, but also having a number of auxiliary practices which can be applied to deal with specific imbalances in the meditation practice.
and also to provide some freshness in meditation if you start to get stale with just the same one practice all of the time. संक्षेप में आप बता रहे हैं, आपका सुझाव है कि हम एक मेन हमारी मेडिटेशन प्रैक्टिस हो, लेकिन उसके साथ कई सारी जो उनके सहायक प्रैक्टिसेस भी रखें, जो कि हमको जो भी हमारी साधना में इम्बैलेंस हो जाए, जो बैलेंस न रहे, उसको ठीक से डील करें, जैसे आपने 3 बारी ऊपर बताई। तो उसका ये एक इम्पोर्टेंट प्रयोजन है। एक और प्रयोजन आप बता रहे हैं कि एक ही तरह की साधना बार बार करने से मन में एक स्टेलनेस आ जाती है, बोर्डम आ जाता है। तो अगर हम इनको भी साथ साथ रखेंगे तो साधना में एक फ्रेशनेस रहती है, मन में संवेग बना रहता है साधना के प्रति। So just to return to this the point I made at the beginning of the talk about the correct and relationship to Buddha Dhamma Sangha and to our life as Buddhists, I always found one of the epithets of the Arahant is very instructive. The Arahant is referred to as the Aseka Pugala. So Aseka means, in modern terminology, we would say the graduate. He's the one who has completed the training. And from this we can conclude that apart from the Arahants, we are all students. We have not yet completed our training. And that as Buddhists, this should be our perception. This is a very healthy perception to develop. I am a student of Buddhism. And I am reminded of an occasion towards the end of the life of Albert Einstein. He attended an international conference, and one young man, amazingly, didn't know who he was. And he said, hello, who are you? And Albert Einstein, who by this time the most famous scientist probably in the history of the world, said, I'm a student of physics. And this is the kind of attitude that we need to, and no matter how many retreats we've done, no matter how many years we've been meditating, we're still students. And this is create that sense of humbleness and also a sense of gratitude for all those that help us on this path of practice, but being proud in a good way, proud to be a student of Buddhism. Not have to be an expert, but to be a student. उसी उद्देश्य थीम को वापस आते हुए कि हमारा जो बुद्ध धम्म संघ के प्रति जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो, तो आप दृष्टांत हमें समझा रहे हैं कि अरहंत के जो गुण बताए जाते हैं उसको कहा जाता है असेख पुंगला, अर्थात ऐसा मानव जिसकी की शिक्षा पूरी हो गई है, अब शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि जो अरहंत के सिवा बाकी सब लोग, हम सब लोग जो हैं एक विद्यार्थी ही हैं जिनकी शिक्षा अभी चल रही है, पूरी नहीं हुई है, हमारी शिक्षा अभी चल रही है। और ये हमारा परसेप्शन हमेशा बना रहना चाहिए कि हम भगवान बुद्ध की शिक्षा के विद्यार्थी हैं, हमको बाद में भी याद रखना चाहिए। उदाहरण के रूप में बताते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन का एक दृष्टांत देते हैं, जो इतने महान वैज्ञानिक थे। कहते हैं कि उनके आखिरी समय में काफ़ी एडवांस स्टेज में, जब तक वो बहुत विश्व प्रसिद्ध हो गए थे, संयोग से एक नया विद्यार्थी आया जो उनको नहीं पहचान पाया। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तो आइंस्टीन ने कहा कि मैं एक फिजिक्स का विद्यार्थी हूँ।
तो आप बता रहे हैं कि इस तरह का एटीट्यूड ही सचमुच में हम सबको रखना चाहिए कि चाहे हमने कितने भी शिविर कर लिए हों, कितने रिट्रीट्स कर लिए हों, कितने सालों से हम साधना कर रहे हों, हम अभी विद्यार्थी ही हैं। और इससे हमारे मन में जो अहंकार कम आता है और एक कृतज्ञता का भाव आता है कि हम एक सचमुच में विद्यार्थी हैं। लेकिन इसमें दीनता का भाव नहीं है, एक सुखद भाव रहता है कि हम एक विद्यार्थी हैं और अच्छी विद्यार्थी जो और सीखना चाहते हैं, सीखने का भाव बना रहता है। So I think I will end the discourse at this point in order to allow us to have some conversation, and if anyone has any questions about anything at all, doesn't have to be based upon the talk, but please feel free to ask, or you can teach me because I'm a student also. तो आप अपना प्रवचन समाप्त कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें कोई प्रश्न पूछते हो किसी भी प्रकार के, तो आपका स्वागत है, हम प्रश्न पूछ सकते हैं। Ajahn, this is not related to meditation, but whenever I see the Buddha sculpture that is right behind you, so it's like there's some hand gestures. So could you just elaborate on that? Because there are Buddha images with different types of various hand gestures. So could you just explain? Yes, they're called mudras, and I'm not such a great expert on all the different mudras. This is, of course, you're probably familiar, this is the famous teaching Buddha from Sarnath, and so the first discourse of the Buddha to the 5 ascetics took place, and the Buddha statues which commemorate this, they developed this convention. This is the teaching mudra, and you have the touching the earth mudra and the meditation mudra. So there are books you can find to. It's not so important to know, but you can take the Buddha image as a meditation object, and just particularly if you feel sleepy and if you close your eyes, maybe you feel a bit dull, then just look at the Buddha, and the feelings that can arise are very uplifting and can be a base for samadhi also. So the sense that the Buddha, the fact you have a statue means that it is still, but the Buddha's eyes are always open. So it's very easy to be peaceful and equanimous if you've got your eyes closed and you don't know what's going on. But the Buddha is peaceful and still and calm, but he sees everything. So this is the essence of like Buddha image for me. आपका प्रश्न था कि जब भी मैं भगवान बुद्ध का कोई रूप देखती हूँ, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं सामने, तो उसमें हाथ के जेस्चर्स अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग इमेज में अलग अलग होते हैं, उनका क्या महत्व है। तो आपका था कि ये विभिन्न मुद्राएं हैं जो भारतीय परंपरा में इनकी चर्चा होती है, और वो जो हमारे जो श्राइन में सामने आप देख रहे हैं बुद्ध रूप, वो सारनाथ की जो प्रथम प्रवचन दिया गया था उसके रूप में उसको टीचिंग मुद्रा कहा जाता है, शिक्षा मुद्रा देने की मुद्रा का बताया जाता है। इसी तरह से कोई और मुद्राओं का आचार्य जी ने जिक्र किया, जैसे भूमि स्पर्श मुद्रा है या ध्यान की मुद्रा है। तो आप कह रहे हैं कि ये मुद्राओं को जानना आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, भगवान बुद्ध रूप को भी एक साधना का कमठान के रूप में, एक मेडिटेशन ऑब्जेक्ट के रूप में दिया जा सकता है,
एक बात जो और कि जब आप साधना करते हुए कभी मन शिथिल हो रहा हो या आलस्य आ रहा है, आँख खोल के भगवान के बुद्ध रूप को देखेंगे तो देखते हैं कि उससे एक अपलिफ्टिंग फीलिंग्स आती हैं, बहुत अच्छा भाव जागता है मन में, और इसको समाधि के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है बुद्ध रूप को। एक बात जो मैं बता रहे हैं कि जब भी भगवान की आप मूर्ति देखते हैं तो उसमें वो आंखें थोड़ी खुली हुई होती हैं और चित्त शांत होता है, चेहरा शांत रहता है, तो बताते हैं कि वो शांत भी हैं और सब कुछ देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके शांत है, खुली आंख भी वो शांत रहते हैं। ऐसा इन बुद्ध रूपों से दिखाने का प्रयास किया जाता है। So I don't know if you are familiar with the history of Buddha images, but in the very first years, well, at the time while the Buddha was still teaching, then people would go to the visit and to pay respects to the Buddha, and if he wasn't there, they would pay respect to his kuti. And the Buddha said it would be better for them to bow to the Bodhi tree, because the Bodhi tree was where I experienced the full enlightenment, and every Buddha is enlightened under a Bodhi tree. And so the Bodhi tree became the symbol of enlightenment and became the object of devotion. And to this day in Sri Lanka, the devotion to Bodhi tree is still quite strong. एक और बात हमें समझा रहे हैं कि जो भगवान की इमेज बनाने की हिस्ट्री थी उसके बारे में जो दृष्टांत भगवान जब के काल में ही जब वो शिक्षा दे रहे थे तो बताते हैं कि लोग जब भगवान को मिलने आते थे विहार में, और अगर वो नहीं होते थे तो उनकी कुटी को ही नमन करके चले जाते थे। होगा कि अगर वो बोधि वृक्ष को नमन करें, क्योंकि वो बोधि वृक्ष है जिसके नीचे बैठ के मैंने बुद्धत्व प्राप्त किया था, तो इसलिए बोधि वृक्ष भी एक बोधि का चिन्ह बना, एक सिंबल फॉर एनलाइटनमेंट। और बता रहे हैं कि अभी तक भी श्रीलंका में उसके प्रति, बोधि वृक्ष के प्रति बड़ी श्रद्धा का भाव रहता है। So if you ever have the opportunity to go to the great stupa at Sanchi, in the stone carvings around the stupa, the figure of the Buddha is left empty, and it's a similar idea as we find in Islam, to have no representation or pictorial representation of God. This was also a principle in the first period of Buddhism. तो आप बता रहे हैं कि अगर आप कभी सांची के महान स्तूपा पे जाएंगे तो वहाँ पे जो विभिन्न चित्र है उनमें भगवान का जहाँ चित्र होना चाहिए था वो स्थान खाली रखा गया है, क्योंकि वो भगवान की मूर्ति बनाने का तब शुरू में ऐसा विधान, ऐसा प्रैक्टिस नहीं थी। वो बता रहे हैं कि जिस तरह से जैसे इस्लाम में भी किसी ईश्वर की मूर्ति, अल्लाह की मूर्ति बनाने का सहायक तरीका नहीं है, उसको खाली छोड़ा जाता है, तो इसी तरह से सांची के स्तूपा में भी भगवान की जो जहाँ स्थान मूर्ति का होता था उसे खाली रखा जाता था। So the Buddha images first started to appear in the area now we call Pakistan, Afghanistan, and following the Greek invasion led by Alexander the Great, he left many colonies of Greek to administer these areas, and at that time the most popular god for the Greeks was Apollo, and there were many statues of Apollo, and the Buddhists saw these statues and they thought they were very beautiful. They said, why don't we have something like that? And so the first Buddhas were copied from the Greek statues of Apollo. And the very first
the oldest Buddha image is usually not sitting cross-legged, like sitting like on a chair. And so that's how it began. And I think that you can see the value of it in that. We say, what makes a Buddha a Buddha? How does someone, what are the qualities of a Buddha? So we can talk both in the negative and the positive, and usually the custom in Theravada is to emphasize the negative, the no greed, no anger, no delusion, completely free from all these things. But there's also the positive side, that the Buddha is someone who is perfected in wisdom, perfected in compassion, and perfected in purity. And so these are abstract qualities, even for meditators, that wisdom, compassion, purity. It's hard to really sort of, grasp these things. But then if you can create a form visible by the eye which can express these qualities of wisdom and compassion and purity, then this is an aid to meditation. And so Buddha images and statues have often become objects of superstition. But that's not that they have to be that. The idea is that when you look at a Buddha, you should be able to bring to mind these qualities of wisdom and peace and compassion as an aid to your remembrance of the Buddha and your, as I say, your relationship to the tradition. Sorry. तो आप हमें बता रहे हैं कि जो पहली मूर्तियां बनी थी वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के एरिया में बनी थी, जब अलेक्जेंडर ने भारत पे आक्रमण किया था और वहाँ पे अपनी कॉलोनीज बनाई थी, तो जो उनके रीजेंट वहाँ रह गए थे, उन लोगों के जो ग्रीक गॉड्स होते थे उनमें अपोलो एक मशहूर ग्रीक गॉड थे, वो उनकी स्टैचू बनाते थे। तो जो भगवान बुद्ध के शिष्य थे, बुद्धिस्ट थे, उस समय उन्होंने उनको वो मूर्तियाँ बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी इस तरह की मूर्तियाँ बनाएं। तो उस तरह से वो ग्रीक इन्फ्लुएंस के कारण पहली मूर्तियाँ बननी शुरू हुई। और वो बता रहे हैं कि सबसे पहली शुरू की जो मूर्तियाँ थी वो चौकड़ी मार के पद्मासन में बैठने वाली नहीं थी, वो कुर्सी पे बैठ के बनाई गई थी। और उनका ऐसा नहीं कि वो उनकी एक वैल्यू भी है, वाली ये है कि जो जब हम भगवान की गुणों को याद करते हैं तो उनको कई बार दो तरह से दिखाया जाता है, एक नेगेटिव वे में कि कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, तो नहीं के रूप में, और एक पॉजिटिव रूप में भी कि जिनमें सम्यक अलग तरह से क्वालिटीज हैं कि प्रज्ञा है, करुणा है, शुद्धता है। अब ये जो क्वालिटीज बताई जाती हैं, प्रज्ञा, करुणा, शुद्धता, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज हैं जिनको कि आप विजुअलाइज नहीं कर सकते। तो इसलिए इस तरह की फॉर्म बनाई गई कि जो स्ट्रक्चर्स बनाई गई जो कि इन तरह के क्वालिटीज को एक्सप्रेस कर सके। अगर मूर्तिकार बहुत अच्छा हो तो वो इस तरह की मूर्तियां बना सकते थे। तो कई बार लोग सोचते हैं कि भगवान की मूर्ति बनाना एक तरह का अंधविश्वास है, उससे क्या होने वाला है। ऐसी बात नहीं है। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि उनकी मूर्ति को देख के मन में वो जो हमारे शुद्धता के विचार हैं कि मैत्री का भाव, ये प्रज्ञा का भाव, करुणा का भाव, शुद्धता का भाव, वो उनकी मूर्तियों को देख के वो जागे, ताकि हम बुद्धानुसति कर सकें, भगवान के गुणों को ठीक से याद कर सकें, और जो हमारा भगवान से बुद्ध से रिलेशनशिप है वो सम्यक हो सके। So just one more point about this, that there's never been really an effort to create like a realistic or humanistic statue of Buddha. The design of the Buddha, the appearance is based upon what we call the Mahapurisa Lakkhana, which we find throughout the sutta, and it was an ancient Indian belief in what we call the 32 marks of a great man.
And in the sutta we find that one of the reasons that so many Brahmins became devoted to the Buddha, because he, in his physical body, he expressed these great marks of the marks of a great man. And so when we look at the history of Buddha images, whether they are stone or wood or whatever, that they mostly, in the ways in which they deviate from a normal, say, human appearance, are to reflect these 32 marks of a great man. एक और बात जो हमें समझा रहे हैं कि भगवान की कोई रियलिस्टिक स्टैचू जो सामान्य मनुष्य की तरह बनाई जाए, वैसा बनाने की कभी कोशिश नहीं हुई। भगवान की जो मूर्तियां बनाई गई वो महापुरुष लक्षण जो है उनके आधार पर बनाई गई, जो भारत के पुराना एंशंट बिलीफ सिस्टम था कि एक महापुरुष के 32 लक्षण शरीर पे होते हैं, जो हमने बता रहे हैं कि सूत्र में इन सबकी एक चर्चा आती है। और एक मुख्य कारण जो ब्राह्मण लोग भगवान के शिक्षा की तरफ आकर्षित हुए वो ये था कि वो 32 लक्षण भगवान के शरीर में दिखते थे, भगवान के बुद्ध रूप में वो शरीर में दिखते थे, और उसके कारण भी उनको लगता था कि ये महापुरुष हैं और इसलिए वो उन तरफ भगवान की तरफ आकर्षित होते थे। तो चाहे वो मूर्तियां किसी भी की हों, पत्थर की हों, लकड़ी की हों, किसी और तरह की हैं, उनका उद्देश्य एक उसका वस्तुस्थ जो रियलिस्टिक भगवान की मूर्ति दिखाना नहीं था, लेकिन जो ये महापुरुष लक्षण है उनको दर्शित करने का उद्देश्य होता था। So virtually the whole history of Buddhist art until quite recently is expressed in Buddha images and Buddha statues. And we can observe that we have no idea who were the sculptors, because there was never any wish to be personally recognized. It's an act of art, it was an act of devotion. But over the years, then this artistic creation came to wanting to have different gestures, and so this is more of a kind of an artistic expression rather than religious expression so much, I think. Yeah. तो हम बता रहे हैं कि जो बुद्धिस्ट आर्ट है उसकी जो पूरा इतिहास, उसमें अगर हम जाएं तो देखते हैं कि भगवान की जो इमेज बनाई गई थी वो इस उद्देश्य से बनाई गई थी जो आपने समझाया हमें। और वहाँ पे हम देखेंगे किसी भी इमेज का, किसी भी मूर्ति का, मूर्तिकार कौन है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मूर्तिकार का उद्देश्य उसको एक आर्ट के रूप में दिखाना और अपनी उपलब्धि में दिखाना नहीं था, लेकिन एक अपना जो डिवोशन है, जो श्रद्धा है, उसको दर्शित करना था। तो श्रद्धा के कारण बनाई गई चीजों पे वो कभी अपना स्वामित्व नहीं रखते थे। ये बात की बातें हैं कि कई सदियों में धीरे धीरे जो आर्टिस्ट लोग थे उनके अपने एक्सप्रेशन और इस तरह के मुद्राएं वगैरह उसमें जोड़नी शुरू हुई। Okay, that's enough on Buddhist. So, thank you, Ajahn, for the wonderful talk and sort of giving us Buddha's meditation techniques in two parts, discursive and non-discursive. So, my question is related with this, that you said that the discursive meditation techniques are just to aid the non-discursive meditation techniques. And does the aim of non-discursive meditation technique is to eventually have this state of rapture, serenity, equanimity, which should lead to dispassion and relinquishment? Is that correct way to understand? So the model that I was expounding just now was one in which you would have your main meditation technique as the non-discursive meditation. So meditation on the breath or some vipassana scanning technique or whatever, and that these discursive meditations can supplement and at times when there are obstacles to developing the non-discursive meditations, they can help. But they are also can be the main practice. They are all capable of taking the mind beyond the five hindrances.
So I think this is the key point for me, that when you start as a beginning of any meditation session, unless you're very adept, your challenge is to take the mind beyond the 5 hindrances. So whether it's samatha or vipassana or whatever, it all starts where the hindrances end. So how do you go beyond the hindrances? So it's good to have a number of different tools. Now, if you have a meditation practice, one which has an element or a wisdom element is kind of strong, where we could say the anicca sanya or dukkha sanya or anatta sanya is an element of that initial meditation practice. Then you have, when the mind does develop the calm and the strong samadhi, you have a foothold, you have a bridge to the more refined wisdom development, because it's there present from the beginning. But with let's say with the metta meditation, then that can take the mind to appana samadhi, it can take the mind to very profound levels of once, whereas in fact, when the mind, it takes the mind to the upachara level. To go to the more profound level, then those perceptions have to be abandoned. You go to equanimity, but you're not going to develop insight into the 3 characteristics solely through metta meditation. Because you're still starting off from idea of sentient beings being happy, but it is a foundation. It can be a very good foundation for wisdom development. Sorry, it's a lot of. दीपक का प्रश्न था कि आपने इनको बहुत अच्छा लगा जो 2 तरह के साधना विधियां बताई, डिस्कर्सिव और नॉन डिस्कर्सिव. तो उनका उद्देश्य था, उनका प्रश्न है दीपक का कि क्या जो डिस्कर्सिव मेडिटेशन है वो केवल इसलिए है कि हम नॉन डिस्कर्सिव साधना के लिए हेल्प करें उसमें, और जो समता समत के भाव से जो सेरेनिटी आती है, जो शांति आती है, फिर प्रीति जागती है, उसके बाद अपने आप ही आगे निवृत्ति का भाव जागता है. तो मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि जो आपने मॉडल बताया उसमें यही बात रखी थी उस मॉडल में कि जो डिस्कर्सिव मेडिटेशंस हैं, विचार करने वाली मेडिटेशंस है, वो दूसरी साधना को मदद कर सकती हैं, और उसके जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उसमें जो निवारण आते हैं, जो उसको दूर करने में सहायता हो सकती है. लेकिन आप कह रहे हैं कि वो ही डिस्कर्सिव मेडिटेशन भी मेन प्रैक्टिस हो सकती है, और अगर हम बहुत कुशल हैं उस तरह के विचार साधना करने में, तो वही हमको 5 निवरण से निकाल के आगे की ओर बढ़ाए जा सकते हैं. मुख्य बात है, उनका विचार है कि चाहे आप किसी भी तरह से करें, मुख्य बात यह है कि हम सचमुच में साधना तभी होती है जब 5 निवरण शांत हो जाते हैं, और उसको उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न तरह के जो टूल्स आपने बताए इस्तेमाल किए जा सकते हैं. फिर आपने बताया कि अगर आपकी साधना का मुख्य उद्देश्य प्रज्ञा जगाना है, जो अनिश्चित संज्ञा, दुख संज्ञा और अनित्य संज्ञा से जगानी है, तो अगर आप उस तरह से शुरू करेंगे तो जब समत का भाव जागेगा, चित्त शांत हो जाएगा, तो क्योंकि आप प्रज्ञा को साथ साथ जाग रहे हैं, तो इट बिकम्स ए ब्रिज टू विजडम, तो आपकी प्रज्ञा जागना सहज हो जाता है. लेकिन जैसे दूसरी साधना है जो नॉन डिस्कर्सिव या साधना है, जैसे मेत्ता की बात कर रहे हैं कि सबका भला हो, सबका मंगल हो, जो हम साधना करते हैं, तो उससे समाधि बहुत गहन हो सकती है, उपचार समाधि तक पहुंच जाती है. और लेकिन हम क्योंकि उसमें 3 लक्षणों के बारे में बात नहीं करते, तो इसलिए वो प्रज्ञा की ओर नहीं ले जा सकती. हाँ, लेकिन क्योंकि हमारा भाव ये रहता है कि बहुत सारे प्राणी हैं, मैं प्राणी हूँ, तो इस कारण से वो त्रिलक्षण की एनालिसिस नहीं हो सकती, लेकिन वो एक अच्छी फाउंडेशन हमारी साधना का बन सकता है. At that particular point of time, light increases before us,
lighting. Light increases, and when we check the breath will not be there, and some sort of joy will be there, but rupture means maybe more. That I was not able to trace. Yeah. Well, you know, I would say my experience of talking with so many meditators over the years is that very rarely does it correspond exactly to what appears in the books. So don't worry about that. But of piti and sukha, piti is the coarser and sukha is more refined, and piti will fall away from the mind before the sukha. So with piti there is some subtle agitation. Yeah. So if your samadhi is strong, then it can more or less go beyond the piti very quickly. It may be just for a short period of time, and then the more profound and the more cool kind of sukha will be much more prominent. So this is dependent on the power of the practice and a particular individual. Whatever the case, our stance, our position as a meditator is we know this. It's like this. Yeah. So our stance is not to become excited about it, not to start thinking, is this piti or is this sukha or is this? You don't do that. Okay. It's like this. It's just like we don't have to give it a name. So like Ajahn Chah says, you have an apple, you eat it, you don't have to know what it's called. You eat it, you get the taste just the same. आपका प्रश्न था कि साधना करते हुए जब सांस हल्का हो जाता है, ऐसा लगता है सांस नहीं है, और कभी कुछ तरह का एक जॉय जाती है, एक प्रसन्नता जाती है, लेकिन प्रीति है कि नहीं पता नहीं चलता है। तो बंदे जवाब दे रहे हैं कि मेरा अनुभव ये है कि कई इतने वर्षों से साधकों से बात करते हुए कि जैसा पुस्तकों में लिखा है हमेशा वैसा नहीं होता। जो भी अनुभव हो रहा है उसको हम समझें। जो प्रीति है वो एक स्थूल अनुभव है, सुख, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत बेचैनी हल्की सी रहती है, उथल पुथल रहती है, और जो प्रीति आगे ड्रॉप हो जाती है और साधना करने से तो सुख का भाव आता है, जिसमें कि कोई एजिटेशन नहीं है, शांत रहता है, एक सेंस ऑफ कूलनेस रहती है। तो ये क्या अनुभव होगा, किस तरह सीक्वेंस में होगा, ये उस पर डिपेंड करता है कि हमारी समाधि कितनी पुष्ट है। समाधि बहुत पुष्ट होती है तो प्रीति की छूटी जाती है और सीधा ही आदमी एक सुख का अनुभव करता है। और ये क्या परिस्थिति पहले आएगी क्या बाद में आएगी, हर एक साधक के बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है। तो जो भी चाहे कैसी भी अनुभव हो, हमें इस पचड़े पे नहीं पड़ना चाहिए कि ये प्रीति है या सुख है। जो भी अनुभव हो रहा है उसको जाने कि ये ऐसा है, इट इज लाइक दिस, जैसा हम सुनते आते हैं। और अनुभव के बारे में कोई एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, कि ना ही उसको कोई नाम देने की जरूरत है। तो उदाहरण देते हैं कि जैसे अजान चाह करते थे कि एक सेब है, अगर हम उसका नाम नहीं मालूम तो हम उसको खा लें और उसका स्वाद लें, नाम जाने से ना जाने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। Light is not the hindrance. Light is not the hindrance. No, light is not a hindrance. Lights are a hindrance, but light is not a hindrance. Okay, so if you're seeing very different lights or different colors, don't follow.
but light is usually the samadhi nimitta, and means that the mind is a sign that the mind is now entering into samadhi. वो पूछ रहे हैं कि जो लाइट अगर दिखाई देती है ध्यान करते हुए, क्या वो एक बाधा है? तो आप कह रहे हैं कि अगर एक लाइट दिखाई देती है तो वो एक निमित्त है सिर्फ समाधि का, हमारा पुष्ट होने का। लेकिन अगर बहुत तरह की नाना प्रकार की लाइट दिखाई दे रही है तो उसको नहीं दे, उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, वो हमारी साधना में बाधक हो सकता है। I have a couple questions around a certain theme. I've heard a couple different definitions of Sakaya Ditti, and I'd like to know yours. So, what exactly is it? How is it removed, and how does one know when it's been removed? Well, the practice of the Eightfold Path is usually telescoped into threefold training of Sila, Samadhi and Panya. And we can refer to it as we call a holistic training, which is to say that it's not a step-by-step training, that all three aspects have to be present. When that threefold training reaches a certain level of maturity, then stream entry can take place. And of the three sangyojana or fetters which are abandoned by the stream enterer, the most important of those is Sakaya Ditti. So Sakaya means like with body, Ditti is the view, the perception of mind and body as being self, belonging to self. We'll just translate this first. आपका प्रश्न था जो सकाय दिट्ठी के बारे में काफी सुना है, अलग अलग तरह के उसके विवरण दिए जाते हैं कि वो आप क्या समझा, किस तरह से समझाते हैं, किस तरह से हटाई जा सकती है और किस तरह से हम जान सकते हैं कि वो हट गई है। तो आचार्य बता रहे हैं कि जो हमारा आर्य अष्टांगिक मार्ग है उसको कई बार 3 मेन ब्रांच में बताया जाता है, शील, समाधि और प्रज्ञा के। तो एक तरह की होलिस्टिक ट्रेनिंग है, कोई एक स्टेप की ट्रेनिंग नहीं है, तीनों एस्पेक्ट पे हमको काम करना होता है, साइमल्टेनियसली काम करना चाहिए। और जब ये हमारी अष्टांगिक मार्ग की साधना एक मैच्योरिटी के लेवल तक पहुंचती है तो प्रथम 3 संयोजन है जिनमें सकाय दिट्ठी सबसे महत्वपूर्ण है, वो टूट जाते हैं। और सकाय दिट्ठी का मतलब है कि काया में सत्य है, मतलब कि हम ये काया जो है चित्त, शरीर और मन जी को अपना मानते हैं और हम मानते हैं कि हम ये शरीर और मन है, तो इस विचार को सकाय दिट्ठी कहते हैं। So I think that the question that often comes up is that if someone through the development of the Eightfold Path or the Threefold Training is able to abandon Sakaya Ditti, then why don't they become Arahant? And what else remains? And the key remaining Sangyojana is that of conceit. So this is a very profound distinction between Sakaya Ditti and conceit. But the most informative passage in the suttas on this topic occurs in the account of the enlightenment of the monk Venerable Khemaka. Now, Venerable Khemaka was an anagami, and he was practicing very hard to go the final step to Arahant, but he could not make that last step.
so he went to visit a group of senior monks to ask their advice. They asked him to describe his practice, and he said, I can see Rupa, Vedana, Sanya, Sankhara, Vinyana, the 5 khandhas, arise and pass away as impermanent, as dukkha, anatta. And they said, well, if you can see that, you must be Arahant, because these monks were not Arahant. And he insisted, no, I'm not. And so he tried to find a way of explaining to them just what the problem was. And he said, it's like a flower and the scent of a flower. And you can't say that the scent is in the stem, you can't say the scent is in the petal, you can't say the scent is in the stamen, but there is still a scent of the flower. And just as I cannot see any self in the form, feeling, but still there is this scent of the self. And then he gave a second analogy. He said it's as if you have a dirty piece of cloth, and then you wash that cloth with detergent, and you take out all of the stains of the detergent. So now that cloth is completely white and clean, but it still has the smell of the detergent. And he said that smell of the detergent is like the conceit of the anagami. But what is so inspiring about this is through that effort to articulate the feelings in his citta, at that moment he realized arahantship, and so did all the other monks. So this, I think, sorry if this is too much for you. This is a slightly separate point, but if you ever want to know how much you really know about something, try and tell somebody else about it. So this is why teaching is learning. When you're learning, it's easy, you have blind spot, and you think, yeah, I know that, yeah, it's okay. But then when somebody else asks you, explain it to me, you find you cannot, you see. And this case, Venerable Khemaka, he finally able to make that last leap to arahantship through the effort to articulate and explain to others. So he became arahant in teaching mode. Yeah. तो आप इस प्रश्न के और विस्तार में जाते हुए बताते हैं कि कई बार ये प्रश्न आता है कि अगर किसी को सक्काय दृष्टि की बात समझ में आ गई है और छूट गई है तो फिर भी वो क्यों अरहंत क्यों नहीं है। तो इसमें मुख्य जो बात हम कई बार बहुत एक प्रोफाउंड डिस्टिंक्शन है, बहुत महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन है उन दोनों में कि जो कंसीट है, असली माना जो है, असली माना का प्रेजेंस एक बड़ा भारी इंट्रेंस रहता है। और इस बारे में इसको एक्सप्लेनेशन के लिए बताते हैं कि खेमका सुत्ता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक अनागामी भिक्षु थे वेनरेबल खेमका, जो काफी प्रयास के बावजूद भी अरहंत नहीं बन पाते। तो एक बार वो सीनियर भिक्षु के पास जाते हैं और वो उनको बताते हैं कि मेरी साधना कहाँ तक हुई है। वो कहते हैं कि मैं 5 खंडों को ठीक से देख पाता हूँ कि मैं ये नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है, और मैं अनित्य, दुख और अनात्म को समझता हूँ। तो 5 भिक्षु, वो जो बाकी भिक्षु होते हैं, वो उनसे कहते हैं कि इसका मतलब फिर तो आप अरहंत हो गए। तो फिर खेमका जी उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं अरहंत हो गया। तो उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि अरहंत में और अनागामी में क्या फर्क है। तो एक उदाहरण वो देते हैं, जैसे एक फूल होता है,
वो एक फूल का एक रूप है, लेकिन उसकी एक सुगंध है, और ये हम नहीं कह सकते कि ये सुगंध कहाँ है, उसके पत्तियों में है, उसकी शाखा में है, उसके डालियों में है। तो इसी तरह से फूल की बात तो समझ में आ गई, लेकिन सुगंध रह जाती है। एक और उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई वो उसी को बात को समझाते कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि 5 खंड मैं और मेरे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं का भाव कहीं रह जाता है। इसी तरह से एक और उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई बहुत गंदा कपड़ा है, उसको आपने बहुत अच्छी तरह से धो दिया डिटर्जेंट वगैरह से, कपड़ा साफ भी हो गया, लेकिन फिर भी उसमें गंध रह जाती है डिटर्जेंट की। तो वो इसी तरह से एक अस्मिमान का जो गंध है, कंसीट का जो भाव है अस्मिमाना का, वो एक गंध छुपी रह जाती है। और सुत्त की महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बात को समझाते हुए, जबकि वेनरेबल खेम का बाकी भिक्षुओं के बात समझा रहे थे, तो उस समझाने की प्रक्रिया में ही उनको खुद अरहंत हो जाते हैं, और बाकी बात भिक्षु भी जो सुन रहे होते हैं वो भी अरहंत हो जाते हैं। तो आप बता रहे हैं कि कई बार जब हम साधना को समझते हैं तो हमको लगता है कि समझ आ गया है, लेकिन जब दूसरे को समझाने लगते हैं तो पता चलता है कि समझाने में दिक्कत हो रही है। तो इसलिए कहा जाता है टीचिंग इज लर्निंग, कि अगर आप सब सिखाते हैं तो उससे प्रोसेस में आपको सीखना भी बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि जो दूसरे को समझाना काफी मुश्किल होता है, और उस समझाने की प्रक्रिया में आपकी अपनी समझ भी बढ़ सकती है। तो इस तरह से एक बहुत अच्छा उदाहरण है सुत्त में कि आखिरी जो जंप थी अनागामी से अरहंत की, वो उन्होंने बाकियों को शिक्षा देते हुए और ली, शिक्षा देते हुए समझाते हुए दूसरों को वो अरहंत हो गए। As regards the knowledge and the understanding, there has been a long history of overestimation of attainment in probably in all traditions, but even at the time of the Buddha, there were already people who believed themselves to be Arya Pukala, and they were not. So Ajahn Chah's advice was never to assume or to why do you need to have this kind of title? You just know what's going on right now in your heart. So he would say, bow to the Buddha of of uncertainty, and you don't have to have all this worked out. Nevertheless, in the forest tradition in Northeast Thailand, if a monk or a nun or anyone feels that their practice has developed to that degree, they will often go to the great masters, particularly those who have psychic abilities, and ask them to look into their mind and to advise them whether they have indeed realized this or not. So I think excuse me. I think for a skeptic would say, well, who is the one who verifies the verifier? And you just have this kind of infinite regress. So all you can say is that this is a matter of faith and agreement amongst the great meditators and in this lineage. तो जहाँ तक वो बता रहे हैं कि जहाँ तक इस बात की जानकारी की है, समझ की है कि मैं क्या कोई श्रोतापन बन गया है, तो बता रहे हैं कि इसकी एक बहुत लंबी हिस्ट्री है, जिसमें कि कई भिक्षु लोग, कई साधक लोगों ने अपने को श्रोतापन समझ गए, लेकिन वो थे नहीं। और ये भगवान के रहते रहते भी ऐसा कई बार हुआ कि ओवर एस्टिमेशन अपनी अचीवमेंट का, अटेनमेंट का। तो इस मामले में अजान चाह का सुझाव यही रहता था
कि कभी कुछ अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। वो कहा करते थे कि आपको एक टाइटल की क्या आवश्यकता है, आपका जो अनुभव है वही और आचरण बोलेगा। कि हमें भगवान के जो नित्य बोध है, जिसको वो अनसर्टेनिटी या मायने के हिसाब कहते थे, कि नॉट श्योर के हिसाब से समझे उस बात को। फिर भी बंते जी बता रहे हैं कि जो फॉरेस्ट ट्रेडिशन है उसमें अगर किसी भी भिक्षु को या नन को लगता है कि कुछ अटेनमेंट हुई है और वो जानना चाहता है, तो कुछ बहुत जो विशिष्ट ग्रेट मास्टर्स हैं जिनके बाद बहुत साइकिक पावर्स हैं, शक्तियां हैं इस तरह के कि वो देख पाते हैं दूसरे के मन की ओर, तो उनके पास जाके वो पूछते हैं कि क्या मेरी मन स्थिति क्या है, और वो उनको बता देते हैं। लेकिन आप ये भी साथ कह रहे हैं कि जो स्केप्टिक है, जो इस तरह की बात पर विश्वास नहीं करता, वो कहेगा कि जो वेरीफाई कर रहा है इस बात को, उसको कोई किसने वेरीफाई किया है। तो ये बातें का इनफाइनाइट रिग्रेस की तरह चलती जाएंगी, इसमें कोई अंत नहीं होगा इस डिस्कशन का। ये बेसिकली एक विश्वास की बात है कि हमें इन महान रहंतों पे विश्वास है कि ये जो कहेंगे वो ठीक होगा, और इस बात को यहीं पे रोक देना चाहिए कि जो बड़े मेडिटेटर्स हैं उनमें विश्वास है कि हाँ ये इनमें शक्तियां हैं कि हमको बता सकें कि हमारी कितनी उपलब्धि हुई है साधना में। Could I begin by paying my respects and conveying my warm wishes on your birthday today from all of us? I just have a question as a lay person. Some people, they are caught up in vicious circumstances, and we all realize that the human birth is very precious, and blessed are those who get to listen to Dhamma and to practice Dhamma. But sometimes, us lay mortals, we are devastated by certain personal tragedies, griefs, sorrows, loss of loved ones, cancers, diseases, which can be really overwhelming. And in those situations, it may be very hard to keep the mindfulness, to be aware. And since as a householder, some people may not have had a luxury of going on retreats where they can actually practice mindfulness in the stillness. So they haven't actually got that much amount of equanimity and mindfulness. So when they're overwhelmed by these circumstances, they actually are not able to practice mindfulness. The mind tends to keep on getting distracted again and again. And then it gets disappointing because we all know that although we are not craving for anything, but one does aspire, it won't be wrong to aspire for stream entry because you really want to practice and you really want to go further on this path. So what would be your advice for a lay person like this who's caught up in vicissitudes of life, who really has a lot of household responsibilities and cannot really go on retreat, who tries to be mindful in his or her daily life, but there is a limitation because you're not really there. You understand it on superficial level, but you really didn't have time to practice that much. So even if you're trying to be mindful while eating, while chewing, while lying down, I guess it's just not enough, or that's what I feel. Thank you. Yeah. I feel that the most useful way of looking at Dhamma practice is in terms of the 4 right efforts. So whether you're in a monastery or you're at home or you're at work, and whether you have a lot going on in your life or not so much going on in your life, then we always have the opportunity to put forth at least one of these kinds of effort. So the first kind of effort is to take care of the mind
and as best we can prevent the unwholesome dhammas from arising in the mind. This is our intention in our daily life. Secondly, on those occasions where we are unsuccessful and the unwholesome dhamma have already arisen, then our effort is to try as best we can to let go and to deal with that well. And then the third effort is that in any situation we find ourselves, then we say, what wholesome dhamma could I cultivate at this time and place? And then if we see some wholesome dhamma already there, how can I take care of this and develop it further? So I'll wait for a translation. आपका प्रश्न था कि जो सामान्य गृहस्थ लोग हैं जो जीवन में समझते हैं कि हमारे जीवन की बहुत बहुमूल्य है और हमें साधना में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन घर की परिस्थितियों के कारण, दुख के कारण, विछोह के कारण, प्रिय से विछोह के कारण बहुत मुश्किल हो जाता है सब सजगता बनाए रखना। और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की हो तो रिट्रीट्स में भी नहीं जा पाते हैं, तो मन जब ऐसी परिस्थिति से ओवरवेल्म हो जाता है तो साधना में डिसअपॉइंटमेंट होती है। और सामान्यतः एक अच्छे साधक होने के नाते हम ये इच्छा रखते हैं कि हमारा स्ट्रीम एंट्री हो ताकि हम मुक्ति के स्रोत में पढ़ें, लेकिन घर की परिस्थितियां और रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण ऐसा समय नहीं हो पाता। तो ऐसा लगता है कि हालांकि हम सामान्य जीवन में सजग रह रहे हैं, खाते हुए, बैठते हुए, पीते हुए, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। तो आप उसके बारे में क्या सुझाव देंगे? तो बंदे जी बता रहे हैं कि धर्म की साधना के लिए जो एक बहुत अच्छा तरीका है कि 4 जो व्यायाम है, सम्यक व्यायाम हम सुनते हैं, राइट एफर्ट, उसके बारे में हम चाहे वो हम भिक्षु हों या गृहस्थ हों, चाहे परिव्राजक हों, चाहे ऑफिस में हों, चाहे घर पे हों, वो सब हमेशा हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहती है वो 4 व्यायामों को डेवलप करने की। कि मतलब 4 हमारे जैसे जो हमारे अकुशल धर्म अगर हैं, अकुशल चित्त की चेतना जागती है तो उसको हम किसी तरह से प्रहार कर सकें, निकाल सकें, और कोशिश यही करें कि अकुशल बातें बाहर से ना आए। इसी तरह से अगर कुशल हमारे चित्तवृत्तियां हैं तो उनको किस तरह से डेवलप करें, उनको भावित करें, और कुशल जो नहीं है उनको कैसे कल्टिवेट करें, उनको कैसे हम अपने भीतर लाएं। तो ये 4 सम्यक व्यायाम है, अगर हम ये करें तो ये हमारे लिए ये आपका पहला सुझाव है इस बारे में। So for instance, if you're driving to work or catching a bus to work, and you say, okay, this period, what are the kind of unwholesome dhamma that can come up in my mind easily? So maybe you get upset or irritated by the bad drivers who don't respect other people. So this is your dhamma practice. How can I get from home to the work without getting irritated or annoyed with the bad drivers on the road? So you can give yourself these like specific dhamma practices. Let's say perhaps you're going into a meeting. Okay, so similarly, what are the kinds of things I have to be careful about? What are the good qualities, dhamma, kusala dhammas I could develop? And you say, oh yes, I still have some problems with my speech. I need to develop more listening skill, not to give more attention to the people I like and just dismiss the people I don't like. Do I have feelings of self-consciousness when I need to speak? Can I speak fluently? So there are so many different Dhamma practices that anyone can fulfill. If we don't have this too limited idea of what Dhamma practice is, nevertheless, it is really important to start the day well, and to have a meditation practice in the first thing in the morning is so important, because many people, at least in Thailand, they will meditate before they go to bed at night, and this is good, of course.
But the problem is that when you wake up in the morning, it's like a new chapter of your life. And it's very hard to see the positive effects of the meditation on your daily life. But if you meditate first thing in the morning and you are observant, you will notice before long you're a bit more patient, a little bit calmer, more mindful, etc. And then you see, oh yes, this meditation practice, it's really helps me in my life. So this is motivating for people. आप आगे समझाते हुए बता रहे हैं हमको कि जैसे हम अपने काम पे ले जा रहे हो, ड्राइव कर रहे हैं, तो उस समय भी हम सजग रह सकते हैं कि क्या बाहर की परिस्थितियों से हमारे मन में गुस्सा आता है, कुछ खींच जागती है, इरिटेशन होती है, तो किस तरह के अकुशल धर्म हम जागते हैं चित्त में, और एक साधना हमारी बन सकती है किस तरह मैं अपने घर से ऑफिस या ऑफिस से घर आ सकता हूँ, आ सकती हूँ कि मेरे मन में कोई भी अकुशल धर्म न जागे। इसी तरह किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो वहाँ पे सजग रह सकते हैं कि क्या मैं जिनको मैं प्रिय मानता हूँ उनकी बात सुनता हूँ, जो प्रिय लगते हैं मुझे उनकी बात को महत्व नहीं देता, तो हमारी जो सोच लिसनिंग है, सजग होकर सोचना, वो भी बात कर सकती है, उसके बारे में माइंडफुल लिसनिंग कर सकते हैं। तो जो भी अकुशल धर्म है और कुशल धर्म जो हमारे सामान्य जीवन में जागते रहते हैं, उनके प्रति सजग रहने से भी साधना बनती होती है। कि अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या हम सेल्फ कॉन्शियस होकर बात कर रहे हैं या अहम नहीं है और स्पष्ट बात कर रहे हैं, तो ये सब हमारे धर्म की साधना का भाग है। जो हमारा कई बार लिमिटेड आइडिया रहता है धर्म का, वो नहीं है, क्योंकि हमारा एक इतनी बात जरूर है कि अगर हम धर्म का असर अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो हमारा दिन अच्छी तरह से शुरू हो। तो इसलिए कहा जाता है कि सबसे सुबह उठते ही पहली चीज जो हमें करनी चाहिए कि हम ध्यान करें। कई लोग बताएं थाईलैंड में कि सोने से पहले ध्यान करते हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन उसका असर अगले दिन जब शुरू होता है, सो के उठते हैं तो नया चैप्टर होता है, उसका फिर असर देखने को नहीं मिलता। अगर हम पहला काम सुबह उठते ही एक साधना का करें तो फिर दिन भर में उस साधना का असर बना रहता है, तो हमें मालूम पड़ता है किस तरह से हमारा चित्त शांत रहता है, हमारा धैर्य बनता है, तो इस तरह से साधना का लाभ हमारे को देखने को मिलता है। When I first entered the monastery in England before traveling to Thailand, I was wearing white like Arpan and accompanied Venerable Ajahn Sumedho to the house of a lay supporter in London, and she had been I believe she'd been the president of the English-British psychiatrists. She was a very senior psychiatrist and well known in her field, and she'd recently retired. So we were discussing, her conclusions from her career and the things that she felt were most useful, or the insights that she'd received from her Buddhist training. And she said, of all the things that I've shared with my patients and things that have had the best results, I would say encapsulate are the 5 precepts. I said I would think after 40 years or something as a psychiatrist, this is the number one most important foundation for mental health. And I always remembered this, and so careful about actions and speech, and having that as a foundation is very important. तो आप अपना दृष्टांत बताने जीवन का कि जब वो पहले मोनास्ट्री में गए थे अनागारिका के रूप में, तो अजान सुचितो के साथ उनके गृहस्थ सपोर्टर के पास जाते थे, जो कि वहाँ की इंग्लैंड की जो मनोचिकित्सक साइकेट्रिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसकी अध्यक्ष भी थी, बहुत रिसेंटली रिटायर हुई थी। तो उनसे चर्चा कर रहे थे कि उनकी जो बुद्धिस्ट ट्रेनिंग है उसका क्या लाभ उनको अपने
मनोचिकित्सा में मिला तो उन्होंने बताया कि जो सब कई चीज़ें जो शेयर की, सबसे ज़्यादा उनको जो बात जिससे लाभ हुआ है पेशेंट्स को था कि 5 शीलों का पालन करना चाहिए, क्योंकि उनको लगा कि 5 डिफिकल्ट लाइफ है, तो उनको खास तौर पे जो वाणी है उसके ऊपर संयम रखना की और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए 5 शीलों में से भी. So one last point is that in the culture in the villages of Northeast Thailand, which have been influenced by the forest monasteries, then there's the minority of people who meditate very regularly, but they do a lot of chanting. And this translated chanting is such a powerful tool. We recommend everyone to, particularly such as the Abhinapachawekana chant, where you say, I am of the nature to age, I have not gone beyond aging, I am of the nature to sicken, I have not gone beyond sickness, I am of the nature to die, I have not gone beyond dying, I will be separated from everyone, everything that I know and love. And I am and then the reflections on karma and the importance of karma. So chanting this and remembering this is just a daily immunization, if you like. So when there is that separation, it's like, how could this happen? I just didn't see this coming, just out of the blue. This kind. No, you see, this is exactly what the Buddha said, separation from all that we love is come to all of us. So we can't avoid these things in life, but it's the sense of not being ambushed by them. We shouldn't. Human beings have been living with this for as long as there have been human beings in the world, so it's a matter of preparing ourselves for these things and a sense of readiness that is key. And then readiness is like the heart that we call apamada, or heedfulness. It's this readiness, not wanting to control everything. I have to have everything this way. You say, but I'm ready for whatever comes. आखिरी बिंदु जो आप बता रहे हैं कि जैसे नॉर्थ ईस्ट थाईलैंड में जो फॉरेस्ट मोनास्ट्रीज हैं उनके लोग आते हैं वहाँ, तो जो मेडिटेटर्स हैं उनमें ऐसा नहीं है कि बहुत रेगुलरली मेडिटेट करते हैं, वो तो कम ही लोग हैं, लेकिन वो लोग चैंटिंग बहुत करते हैं और खास तौर पर जो चैंटिंग ट्रांसलेट करके हैं ताकि वो समझ में आए, तो उनको वो अजान काफ़ी रिकमेंड करते हैं कि वो करनी चाहिए. खास तौर पर जैसे उदाहरण के तौर पर जो 5 डेली रिफ्लेक्शंस कहे जाते हैं कि मैं जरा धम्मा हूँ, व्याधि धम्मा है, मरण धम्मा है, और जो प्रिय हैं उनसे हमारा सेपरेशन हो जाएगा, और जो कर्म है, जो हम कर्म के ही हम हमारा योनि है, कर्म ही हमारा बंधु है. तो जो ये 5 मुख्य डेली रिफ्लेक्शंस कहे जाते हैं, आप कहते हैं कि वो एक तरह से डेली इम्यूनाइजेशन है, जैसे प्रतिरोधक शक्ति हमारी बढ़ाता है, क्योंकि जब जीवन में कभी भी किसी प्रिय से विषय होता है तो फिर हमको, अगर हम ये चैंटिंग रोज करते हैं तो हमको सरप्राइज नहीं लगता, वो मालूम पड़ता है कि हाँ भगवान बुद्ध तो ये कहते ही थे, ये बात तो सच है, क्योंकि जब से मनुष्य यहाँ हुए हैं अनंत काल से ये बात चली आ रही है कि जो प्रिय से विषय होता ही है. तो इस तरह से अगर हम इनको इस चैंटिंग को रोज करते हैं तो उससे भी एक प्रमाद रहित होते हैं, अप्रमाद जागता है, एक हीटफुलनेस जागती है, और जीवन को जीवन के विषम परिस्थितियों को डील करने में मदद मिलती है. So one last question. So, what time are we supposed to end this meeting? 8 o'clock. 8 o'clock. Okay. Well, what I would suggest is if
everyone would just like to stretch their legs for 5 minutes because you've been sitting for a long time. And then before we leave, let's just have a short meditation together to end the meeting quietly. Yeah. So please feel free to get up and stretch your legs. परमिशन ले लो इंग्लिश में, क्वेश्चन हिंदी में पूछ लेना। हिंदी में पूछना कुछ नहीं होता। Respected Ajahn, मेरा प्रश्न है कि जो मेत्ता चैंटिंग है, मेरा काफ़ी मन करता है मेत्ता चैंटिंग करने का। तो ये जो मेत्ता चैंटिंग है, ये निर्वाण की प्राप्ति में कितनी जल्दी सहायक हो सकती है? So her question is that I very much like to do metta chanting and do every day, morning, evening. She wants to know whether it will be helpful in moving towards Nibbana or... Yes, absolutely. Very good. Yes. So, how do you chant? What do you chant exactly? I can speak because she is my wife. We meet together every day morning. Yeah. That's a chant from Patisamridha Magga, Aham Avero Homi Avapajomi. So the whole of it, Okay. Which is about 10-12 minutes, one line. Starting from ourselves to others, to devas, to human beings of various domains, and east direction, west direction, and then above, below, left. So that it is we're taken from that Patisamridha Magga. Yes, that's standard one, which is there. Very good. But I do quite often, and I like it. Yeah. And not only in the morning and evening, even if I get up at night, I do, or some during the day also. I feel quite comfortable with this, but how much it is going to take me quickly towards enlightenment? Quickly is important. You don't worry about quickly or slowly. Just you're on the right path. That's very good. But the theme, during the Dhamma talk, I was talking about the discursive and non-discursive. So discursive, all these different groups and categories expanding, but then, there is a certain feeling of metta
that you can feel in your heart. Yeah. So once you've been through this chant, then this feeling start to get quite strong. And then the next stage is you just make this feeling your meditation object. Okay, so this will take you into the samadhi deeper than just with the words. So this is a good example of relationship between discursive and non-discursive. But then if you leave the words of spreading according to the chant, and you come to the feeling, but then your mindfulness is not strong enough, and you start to have some distraction, then you come back to the words again to establish the mindfulness again. Yeah. Thank you. आप बता रहे हैं कि मेत्ता का करने से जो चित्त में सुख होता है, बहुत अच्छी वेदना होती है, तो फिर जब ऐसी स्थिति आए तो फिर उसकी वेदना की ओर ध्यान देके साधना की जा सकती है। और अगर वेदना की ओर ध्यान देके मन भटकता है तो फिर हम दोबारा से शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों को जोड़ के, डिस्कर्सिव और नॉन डिस्कर्सिव को जोड़ के हम धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा एक और प्रश्न है छोटा सा, कि जब मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग को देखती हूँ या आकाश को देखती हूँ या आकाश पाताल जहाँ मिलते हुए दिखाई देते हैं, जब मैं उनको देखती हूँ तो मेरे मन में कुछ क्षण के लिए वैराग्य सा आ जाता है। लेकिन सामान्य जीवन में वो वैराग्य इतना ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। सामान्य जीवन में क्रेविंग होती है, उस समय मैं माइंडफुल नहीं होती हूँ। तो जब मुझे ऐसा वैराग्य सा लगता है कि सब बेकार है, तो मुझे उस समय क्या करना चाहिए? जान लेती हूँ कि वैराग्य जगह है, लेकिन वो बहुत क्षणिक होता है। She is saying that when I look at the sky for a long time or look at the horizon, a sense of dispassion and disenchantment arises, but that doesn't carry on into the daily life. Mm-hmm. So, could you advise on what to do about that? Yeah, this is what we call is creating the parami, or creating the good karmic tendency in the mind. But it's not it's not such a quick fix as this. We have been following the defilements for millions and millions and millions of lives, So you can do this meditation for a few years, but it's not something that's so easy, but it's a good thing to do. But if you don't worry about the results, and it's like when you're a kid and you're, mommy, am I there yet? It's just always like when you're looking at the clock and you're wondering about when this is going to have the result I want, then it becomes disturbing. But when you understand, this is a very good and wise practice, sometime in the future it will mature. It will crystallize, but now we're still in the place, just very humbly creating the conditions. आपका उत्तर है कि ये जो इस तरह के साधना है वो एक तरह से हमारी अच्छी पारमी बनाती हैं, लेकिन ये हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे करने से बहुत जल्दी हमारी साधना का लक्ष्य उद्देश्य पूरा हो जाएगा, क्योंकि हम जो अकुशल चित्त की चेतनाएं हैं वो लाखों करोड़ों वर्षों से ये चला आ रहा है। तो अगर हम कुछ वर्षों से ये कर भी रहे हैं तो ये बहुत आसानी से बदलने वाला नहीं है। तो हमें इसके जो रिजल्ट है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, उसके फल की इतनी चिंता नहीं रखनी चाहिए। बस ये है कि ये अच्छी साधना है, इस तरह से करते रहना चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस है, और करते रहेंगे तो धीरे धीरे आगे प्रगति होगी। But just one last point is that the point is to distinguish, identify the feeling. You see this feeling of equanimity or this feeling of nibbida, and so you can access that feeling. And then in daily life, this is a mindfulness you can bring to your mind.
So it is something that you can just bring and apply. But you have to be able to develop that fluency where you are very familiar with that whole sense of equanimity and nibbida, and so it's there, and you can just like take out of the drawer and use it. But this is another step on from looking at the sky or developing a feeling, and it just won't, unlikely that this will just naturally manifest in daily life. You have to make a further step of identifying and memorizing and learning how to apply. एक महत्वपूर्ण बात और अजान बता रहे हैं कि ये जो निबिदा का भाव, समता का भाव, उपेक्षा का भाव जागता है आकाश को देख के या क्षितिज को देख के, वो उसको जब वैसी वेदना जागती है तो उसको हमको अभ्यास करना चाहिए कि वो वेदना हमारे साथ, उसको हम ठीक से जाने, और जब भी इतने अभ्यास करें कि जब हम चाहें वो वेदना का वो भाव हमारे फीलिंग्स जो है हमारे मन में आ सकें. तो इस तरह की एक फ्लुएंसी, एक एबिलिटी डेवलप करनी चाहिए. कई बार हम समझते हैं कि अपने आप हो जाएगा, ये अपने आप नहीं होगा, इसके लिए एफर्ट करना होगा. कि हम जो जब हमको आकाश को देख के या क्षितिज को देख के निबिदा का भाव जागता है, उपेक्षा का भाव जागता है, तो उसको भाव को सजगता से देखें, उसके प्रति सजग रहें, माइंडफुल रहें, और फिर बार बार अभ्यास ऐसे करें कि वो हम जब चाहें, जैसे कोई चीज ड्रॉअर से निकालते हैं, वैसे जब हम चाहें हम वो वाला भाव, वो वाली मन की स्थिति अपने मन में प्रकट कर सकते हैं. Okay. Thank you. So I'd like to invite you all to sit together in meditation for 30 minutes to end the meeting in silence and calm and peace. So I'm not going to give any meditation instruction. We'll just all sit quietly together. So before that, I seek your permission to do the Anumodana. Yes. आनंदमयं धम्म कथाय साधुकारं ददामसे. साधु 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 अनुमोदामि.
Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantam Vivadeti Suvakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namasami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami. So since for many years now I've been living more or less alone and looking for ways to be able to propagate the Dhamma without compromising the solitude and that I enjoy so much, and developed a practice whereby every Tuesday and every Saturday I write out a teaching, compose a teaching in longhand, and then I post on the WeChat groups. So there are 4 groups. There are 2 groups in China with many hundreds of people who signed up, and then there is an Italian group and kind of English language group. And this book is a collection of these handwritten teachings. If anybody is interested in signing up for the group, we can do that also. You need to download the WeChat app on your telephone, and then we can arrange it, and then you receive on your telephone twice a week. But if that's not convenient for you, then there is the book. So please help yourself.